Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to lecture number 24 of differential geometry. Last time हमने जो चीज़ें की थी उसमें what are tangents to the surface, उसके बाद हमने देखा था what are tangent vector fields to the surface, और उसके बाद हमने gradient vector field की definition की थी और हमने ये देखा था how we can use this gradient vector field to define the tangent vector field to any surface. आज के लेक्चर में हम देखेंगे what are differential forms on surfaces. So differential forms हमने already किए हुए हैं, but there were differential forms on R3. हमने पूरी space जो R3 है उसके ऊपर differential forms define किए थे. One form define किया था, उसके बाद हमने exterior derivative define किया था, लेकिन वो तमाम का तमाम R3 के लिए था. अब हम ये देखेंगे how we can define differential forms on a surface. उसके बाद हम exterior derivative define करेंगे. So exterior derivative एक ऐसा derivative था जो कि one form को two form पे ले जाता है, two form को three form पे up to so on. और अगर differential forms let's say one form या zero form या two forms surfaces के ऊपर हैं तो उनके exterior derivative कैसे लेंगे. उसके बाद हम ये देखेंगे what are differential forms on the Euclidean plane. So R2 जो है it is a two dimensional object, ये एक surface है, it is a special kind of surface. जो हमारे पास plane है R2, it is a special kind of surface. So for example अगर हमारे पास ये R3 है, this is X, this is Y, this is Z, and if there is a plane inside this R3, so this is the R3 and this is a plane R2, then this is a surface. और इस सेक्शन में हम देखेंगे कि अभी उससे पहले दो सेक्शंस में जो हमने differential forms और exterior derivative define किए थे, how we can apply those definitions on this very particular and very easy surface, और ये results क्या बनेंगे हमारे पास. उसके बाद हम दो special किस्म की forms हैं, closed and exact forms, ये हम स्टडी करेंगे और ये तमाम की तमाम हमें आगे काम आएगी to study surfaces. Now what are differential forms? R3 में हमने differential form की definition में सबसे पहले one form की definition की थी. So what is a one form? So let me remind you what is a one form. So one form is a real valued function. So phi, let's say phi is a one form. One form, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, one form. If phi is a real valued function on tangent vectors of R3. So basically phi is a function which takes vectors, tangent vectors to R3 at any point P, and it gives us real numbers. So for all tangent vectors V. Secondly, phi is linear. So phi is linear means phi of AV plus BW is equal to A phi of V plus B phi of W. और ये जो दो vectors हैं, they are tangent vectors to R3 at the same point P. So अगर ये दो properties satisfied हो जाएं तो हम ये कहते हैं this phi is a one form. उसके बाद हमने ये देखा था, so every one form can be written as fi dx I, and I varies from 1 to 3. और उसके बाद हमने exterior derivative की definition की थी. हमने देखा था कि d phi is a two form, और साथ साथ हमने ये भी देखा था what is a zero form on R3. So zero form are just functions
from R3 to R. So what is a zero form on R3? These are just functions or real valued functions from R3. और उसके बाद हमने फिर 2 फॉर्म्स और 3 फॉर्म्स और अप टू सो ऑन वो चीज़ें पढ़ी थी. आइए सबसे पहले इस ज़ीरो फॉर्म और 1 फॉर्म को देखते हैं कि व्हाट इज़ ए ज़ीरो फॉर्म ऑन ए सरफेस M एंड व्हाट इज़ ए 1 फॉर्म ऑन ए सरफेस M. सो इससे पहले हमने R3 में ये दोनों चीज़ें देखी. अभी देखते हैं व्हाट आर these things on the surface. So a zero form on M is a function from M to R. So it is a real valued function. बिल्कुल ऐसे ही जैसे R3 के ऊपर अगर जीरो फॉर्म थी, it is a real valued function from R3 to R. और अगर कोई जीरो फॉर्म है on the surface, then it is a function from M to R. So what is M? M is the surface in R3. So that is how we define a zero form on the surface. Now what is a 1 form on the surface? So it is a real valued function on the tangent vectors on M. So this is the first condition, real valued function phi on the tangent vectors on M. So this is the first condition. So phi is also a real valued function on tangent vectors of R3. जितने भी tangent vectors R3 में हैं उनका ये फंक्शन है, वो इसकी डोमेन है और आउटपुट हमारे पास रियल नंबर्स हैं. और इसी केस में भी अगर सरफेस के ऊपर आप डिफाइन कर रहे हैं तो इट इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द टेंजेंट वेक्टर्स ऑन M. सो व्हाट इज़ द डोमेन इन दिस केस? टेंजेंट वेक्टर्स टू द सरफेस. और इस केस में R3 के केस में आपके पास क्या डोमेन थी? टेंजेंट वेक्टर्स टू R3. तमाम के तमाम टेंजेंट वेक्टर्स, हर पॉइंट पे जो टेंजेंट स्पेस है उन तमाम का यूनियन ले लें, वो तमाम के तमाम टेंजेंट वेक्टर्स आप ले रहे हैं, वो इसकी डोमेन में है. और किसी भी वेक्टर पे आप फाई अप्लाई करेंगे आपके पास रियल नंबर आएगा. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. और सेकंड कंडीशन जब हम इसको सरफेस में कन्वर्ट करते हैं, ये क्या बनेगी? फाई इज लीनियर ऑन TP of M for every P belongs to M. So phi is linear. What does linear means? Phi of A V plus B W is equal to A phi of V plus B phi of W. और इस केस में मैंने कहा था कि P is fixed क्योंकि V और W जो हैं they are tangent vectors to R3 at the same point. So basically V P and WP are elements of tangent vectors to R3 at point P. So इसी कंडीशन को ट्रांसलेट करेंगे हम इन केस ऑफ सर्फेसेस. सो कंडीशन क्या बन गई? फाई इज लीनियर ऑन TP ऑफ M फॉर एवरी P बिलोंग्स टू M. सो कोई सी भी सरफेस हमारे पास गिवन है, हम उसके हर पॉइंट पे टेंजेंट स्पेस डिफाइन कर सकते हैं. And this tangent space is different from the tangent space of R3 क्योंकि R3 के केस में आप तमाम के तमाम वेक्टर्स ले लेते हैं which are tangent to R3 at point P. So in other words आपने collection of all vectors ले लिया है which have P as its initial point. लेकिन TP of M में आप तमाम वेक्टर्स नहीं ले रहे जो P के ऊपर हैं, आप सिर्फ वो वेक्टर्स ले रहे हैं which are tangents to the surface. So for example if M is a surface in R3, so let's say this is M. So किसी भी पॉइंट पे मैं जो तमाम के तमाम टेंजेंट वेक्टर्स हैं उनको let's say इस ग्रीन से शो करता हूँ. So these are all the tangent vectors. तमाम डायरेक्शंस में ये तमाम के तमाम टेंजेंट वेक्टर्स हैं. लेकिन इनमें से कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि टेंजेंट टू द सरफेस हैं. और वो कौन से हैं? विच आर टेंजेंट टू सम कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट. सो दिस इज द टेंजेंट वेक्टर. सिमिलरली देयर इज सम अदर कर्व एंड दिस इज द टेंजेंट वेक्टर. सिमिलरली देयर इज सम अदर कर्व. सो दिस इज द टेंजेंट वेक्टर. Similarly there is another curve. Let's say this is another curve and this is the tangent vector to the curve, and they all form a
tangent plane. So all of them lie on a tangent plane, all of these blue arrows. So all of them lie on this plane, and these green arrows are tangent space to R3 at point P. So यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो भी tangent to the surface है at point P, वो vector definitely TP of R3 का element होगा. So you can say that TP of M is contained in TP of R3. So what is the condition? So basically इस केस में आपने जो second condition ली है, so second condition आपके पास ये हो गई है that phi is linear on this subspace of TP of R3 which are tangents to the surface at point P. So ये दो conditions अगर satisfied हैं, जो कि हमने basically जो one form की definition थी for R3, उसको restrict कर दिया है onto the surface. So सेम डेफिनेशन थी, लेकिन हमने उनकी डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. यहाँ पे आपके पास डोमेन सेट ऑफ ऑल टेंजेंट वेक्टर्स टू R3 है, यहाँ पे आपने टेंजेंट वेक्टर्स टू M कर दिया है. यहाँ पे आपके पास लीनियर होना चाहिए इसको, वेयर VP एंड WP बिलोंग्स टू TP ऑफ R3. सो इन अदर वर्ड सेट ऑफ ऑल दीज ग्रीन एरोज, लेकिन यहाँ पे हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया टू TP ऑफ M विच इज़ ए सब स्पेस और विच इज़ ए सबसेट ऑफ दिस बिगर सेट, जो कि वो टेंजेंट वेक्टर्स हैं विच आर टेंजेंट टू सम कर्व पासिंग थ्रू दैट पॉइंट ऑफ द सरफेस. सो दैट इज हाउ वी डिफाइन ए वन फॉर्म ऑन ए सरफेस. नाउ हाउ डू वी डिफाइन टू फॉर्म्स एंड थ्री फॉर्म्स ऑन R3? हमने ये देखा था कि एक इंट्यूटिव डेफिनेशन की थी. सबसे पहली बात तो ये है जब हम R3 का केस कर रहे थे. सो व्हाट वाज दैट इंट्यूटिव और रफ डेफिनेशन ऑफ ए टू फॉर्म? सो हमने कहा था दीज आर जस्ट मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वन फॉर्म्स विद ईच अदर, और ये ख़ास किस्म की मल्टीप्लिकेशन थी. इसको हमने वेज प्रोडक्ट का नाम दिया था. सो फॉर एग्जांपल dx वेज dy. सो dx इज़ ए वन फॉर्म, dy इज़ ए वन फॉर्म, और इन दोनों का वेज ले लें देन इट इज़ ए टू फॉर्म. Similarly, phi and psi be one forms, then their wedge product is a two form. Similarly, if phi prime is one form and psi prime is two form, then phi prime wedge psi prime is a three form. So this was the rough definition. और उसके बाद हमने ये भी कहा था कि हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक टू फॉर्म लिखनी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ phi wedge psi, it's a two form, प्लस dx wedge dy. So हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और इट इज़ वंस अगेन ए टू फॉर्म. सो बेसिकली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज वन फॉर्म्स अनदर टू फॉर्म और थ्री फॉर्म अप टू सो ऑन. और हमने एक और चीज़ भी की थी दैट थ्री फॉर्म्स तो R3 में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन नो फोर फॉर्म्स ऑन R3, क्योंकि जो R3 की डायमेंशन है वो 3 है और 4 इज बिगर देन 3, सो देयर विल बी नो फोर फॉर्म्स. सो यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि सरफेस हमारे पास M इज टू डायमेंशनल. सो अगर ये टू डायमेंशनल है देन दिस इम्प्लाइज दैट नो थ्री फॉर्म्स, क्योंकि इसमें जितनी भी थ्री फॉर्म्स होंगी वो ज़ीरो हो जाएंगी. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डिस्कशन कि R3 पे हमने टू फॉर्म्स और थ्री फॉर्म्स डिफाइन किए थे. रफली हमने डिफाइन किया था उनको. हमने कहा था दीज आर एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वन फॉर्म्स. सो एक तीन वन फॉर्म्स ले लें, उनका आपस में वेज ले लें तो हमारे पास थ्री फॉर्म बन जाएगी. सो
similarly so now consider what is a two form. So इसी definition को हम थोड़ा generalize करने की कोशिश करते हैं. What is phi, which is a one form? It is a function on tangent vectors on M, and it is a real valued function which is linear. Two form को हम ऐसे define करेंगे that it is a function of two vectors and it is a real valued function and it is linear in both coordinates. So basically psi of AV plus BU W is equal to A psi of VW plus B psi of UW. इसमें देखें ये A हमारे पास यहाँ आ गया, ये भी हमारे पास यहाँ आ गया, और psi of V and W, psi of U and W. So this is V and W and this is U and W. So this is the rough generalization. So आइए हम देखते हैं कि टू फॉर्म को प्रॉपरली कैसे डिफाइन करेंगे. इससे पहले हमने जस्ट एक रफ डेफिनेशन, एक इंट्यूटिव डेफिनेशन की थी कि किसी भी दो वन फॉर्म्स को प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास टू फॉर्म आ जाएगी, या दो टू फॉर्म्स हैं उनका हम सम ले लें तो मेरे पास एक और टू फॉर्म आ जाएगी. सो अभी हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे दैट व्हाट इज ए टू फॉर्म. सो this is the proper precise definition of a two form. A two form eta, so this is the word eta, on a surface M is a real valued function on all ordered pairs of tangent vectors VW to M such that, सबसे पहली कंडीशन तो ये है, is linear in V and W and eta of VW is equal to minus eta WV. So बेसिकली कंडीशंस तो दो लिखी नज़र आ रही हैं आपको, लेकिन हिडन एक और कंडीशन भी है, इज़ ए रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स टू एम. सो बेसिकली कोई से भी दो टेंजेंट वेक्टर्स लें. लेट्स से दिस इज a surface in R3 and let's say these are some, and so let P be a point, and on this point I have a tangent plane, and this tangent plane is denoted by TP of M. So अगर मैं किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट स्पेस है उसके वेक्टर्स लूँ, दो वेक्टर्स, पेयर ऑफ वेक्टर्स, सो eta of VW where VW belongs to tangent space to M at point P, then this is going to be a real number. So this is basically the hidden first condition. कोई से भी मैं दो वेक्टर्स लूँ belonging to the same tangent space to the surface at this fixed point P, then this will give me a real number. Similarly अगर मैं कोई और point Q ले लूँ, इस पे एक और tangent space होगी T Q of M, or this is also true for this point Q as well. So eta of V prime W prime belongs to R for all V prime W prime belongs to TQ of M. Similarly कोई और point मैं ले लूँ तो उस केस में भी ये true है. So in general this is true for all ordered pairs of tangent vectors VW to M. So this is true. And secondly, it is linear in V and W. So linear in V and W का क्या मतलब है? So let's say what is linear in V? So is linear in V. So linear in V means आप W को फिक्स कर दें और V जो है उसकी जगह आप ये पुट कर दें AV plus BU, और W को आपने फिक्स रखा है, then this must be equal to A eta VW plus B eta UW. So इसमें W जो था वो फिक्स्ड रहा, W की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आई,
और जो ए वी प्लस बी यू है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, या ये जो ईटा है इट इज़ लीनियर इन द फर्स्ट element of this ordered pair. So this ordered pair a v plus b u and w, इस ordered pair पे आपने eta अप्लाई किया तो eta is linear in the first element but w remains the same. Similarly eta vw is linear in w. So what does this mean? This means that v अब fixed रहेगा हमारे पास, और let's say alpha w plus beta z is equal to eta alpha into eta vw plus beta into eta vz. So that's how we distribute this eta on this alpha w plus beta z. So what is wz? This is basically elements of some fixed tangent space to the surface. So same point पे, लेकिन अगर मैं पॉइंट चेंज कर दूं तो मेरे पास ये एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, और उसके लिए भी ये ट्रू है. So this is true for each and every element. So over here v also belongs to TP of M. So this is true for all V, W, Z. इसमें V as it is रहेगा, लेकिन W और Z इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ईटा उन पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. So ईटा is linear in W or the second coefficient. Now another important property जो कि अगर आपको याद हो, जब हमने टू फॉर्म्स किए थे तो हमने कहा था कि dx wedge dy is equal to minus dy wedge dx. So this was the alternation rule, और इसमें हमने कहा था कि it has important consequences as well. So इसी प्रॉपर्टी को अगर आप देखें तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन गई है that eta of vw is equal to minus eta wv. Now what is a D form? So a D form is a form of degree D. So for example, अगर मेरे पास psi 1, psi 2, up to so on, psi n are one forms, then psi 1 wedge psi 2 up to so on wedge psi n is an n form, और इसकी डिग्री क्या है? ऑफ डिग्री n. सिमिलरली अगर मैं d नंबर ऑफ वन फॉर्म्स लूँ, उनका वेज प्रोडक्ट लूँ, तो मेरे पास एक d फॉर्म आ जाएगी, और d को मैं कहूँगा दिस इज द डिग्री ऑफ द फॉर्म. सिंस सर्फेसेस आर टू डायमेंशनल, hence all the p forms with p greater than 0 are 0. ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे R3 में आपके पास नो 4 फॉर्म्स और फॉर्म्स ऑफ डिग्री हायर देन 4. सो नो 4 फॉर्म्स और फॉर्म्स ऑफ डिग्री हायर देन 4, क्योंकि हमारे पास जो R3 है इट इज़ 3 डायमेंशनल. सिमिलरली हमारे पास जो सरफेसेस हैं दीज आर 2 डायमेंशनल, और अगर ये 2 डायमेंशनल हैं देन नो 3 फॉर्म्स और फॉर्म्स ऑफ हायर डिग्री. Now let's see some properties of forms. So अगर कोई मेरे पास 2 p forms हैं then I can add them. So let's say अगर मेरे पास psi है जो कि 1 form है, is 1 form, और मेरे पास phi है जो कि 1 form है, then I can add them.
psi plus phi. Similarly, अगर मेरे पास two forms हैं, then I can also add them and up to so on. लेकिन मैं one form को two form में add नहीं कर सकता. If one form can be evaluated on a vector field V, so basically हमने देखा था कि अगर मैं कोई सी भी one form लूँ और इसको मैं किसी वेक्टर पे अप्लाई करूँ तो मेरे पास एक रियल नंबर आएगा. सिमिलरली मैं डिफाइन कर सकता हूँ व्हाट डज इट मीन कि मैं किसी वन फॉर्म को वेक्टर फील्ड पे अप्लाई कर रहा हूँ. सो इसका ये मतलब है कि हर पॉइंट के लिए मेरे पास फॉर एवरी पॉइंट ऑफ R3 I will have a vector. So this is a vector and this is vector field. Vector field क्या होता है जी? A vector field is a function that assigns a vector to each and every point of R3. So R3 का कोई सा भी पॉइंट ले लें, let's say ये मैंने एक पॉइंट लिया, there will be a vector so assigned by this vector field V. So VP is equal to VP. So this is the vector part V and P is the point of application. Similarly, अगर मैं कोई और सा point ले लूँ Q, then V of Q is going to be another vector W with point of application W. So W Q up to so on. कोई सा भी मैं रियल स्पेस का पॉइंट लूँ तो मेरे पास हमेशा एक वेक्टर आएगा विद दैट पॉइंट एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. सो मैं इस चीज़ को डिफाइन कर सकता हूँ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ वन फॉर्म ऑन द वेक्टर फील्ड. सो इसका ये मतलब है मैं इस पे जब अप्लाई करूँगा तो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे अप्लाई करने का मतलब है मैं फाई को अप्लाई कर रहा हूँ वी ऑफ पी पे, देन इट इज़ गोइंग टू बी ए रियल नंबर. सो इन अदर वर्ड्स इस फंक्शन के लिए what is input? Input are points of R3 and what is output? Output is a real number. So you can say that phi of V, where V is the vector field, is a function on R3 and the output is a real. So it is a real valued function on R3. Similarly, अगर मैं one form को इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ on a vector field, I can apply a two form on a pair of vector fields V and W. So for example, I can define eta V W. So where V and W are vector fields. So किसी भी point पे मैं कैसे define करूँगा? So at a point P, this function will be defined as eta of V of P and W of P. So what is V of P? It is a vector. And what is W of P? It is another vector. और इन दोनों का जो point of application है वो same है. They are vectors at the same point. So let's say हमारे पास जो vector field V था वो उसने एक vector दिया at point P जिसका point of application P है. So अगर मैं W ले लूँ, so let's say W is the vector field और उसको मैं इसी सेम पॉइंट P पे अगर अप्लाई करूं तो मेरे पास एक और वेक्टर आएगा एंड लेट्स से दिस वेक्टर इज WP. सो बोथ वेक्टर्स हैव द सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. सो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाएगा विच इज ईटा V of P and W of P. V of P is a vector, W of P is a vector, and eta of V of P W of P is going to be a real number, so it belongs to R. So once again we have a function जिसका input points of R3 हैं और output हमारे पास real numbers हैं. So once again it is a function from R3 to R. Now the second axiom of the definition of two form implies this. Now let's see what is second axiom. So this is the alternation rule जो कि हमने
पहले टू फॉर्म्स में स्टडी किया था. सो अगर मैं कोई से दो वेक्टर सेम ले लूँ, सो फॉर v belonging to some tangent space to M at point P, where P is any point. कोई सा भी पॉइंट है सरफेस के ऊपर. उस केस में आप देखें what is eta of VV. So according to the second property this should be equal to, अगर मैं इन दोनों की प्लेसेस आपस में चेंज कर लूँ, V को W और W को V कर दूँ, तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी, लेकिन एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. सो इस केस में हम इसको ट्राई करते हैं. सो जो पहले नंबर पे एलिमेंट लिखा हुआ है उसको मैं दूसरे नंबर पे कर देता हूँ, विच इज़ V, और जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है उसको मैं पहले नंबर पे कर देता हूँ, विच इज़ अगेन V, लेकिन एक नेगेटिव साइन भी आएगा साथ में. सो दिस इम्प्लाइज दैट ईटा ऑफ VV प्लस ये माइनस ईटा ऑफ VV उस साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा ईटा VV. दिस इज जस्ट अ रियल नंबर. सो ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ईटा applied on a pair of vectors is going to be a real number. So this is equal to 0. So this implies that 2 into eta VV is equal to 0. So if the product of two real numbers is 0, so either this number is 0 or this number is 0. Now 2 can't be equal to 0. So this implies eta of VV equal to 0. So हमने P कोई सा arbitrary point लिया था और V कोई सा भी वेक्टर लिया था उस पॉइंट पे जो टेंजेंट स्पेस बन रही है उस पे. सो बेसिकली वी कैन से दैट दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वेक्टर ऑन ईच एंड एवरी टेंजेंट स्पेस टू द सरफेस. Now let eta be a two form on a surface M and V and W be two linearly independent tangent vectors at some point of M. So once again let's say हमारे पास ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट स्पेस डिफाइन की. दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज ए प्लेन. नाउ V and W are two linearly independent tangent vectors. So इसका मतलब है कोई से दो वेक्टर्स हैं जो कि इस टेंजेंट प्लेन TP ऑफ M के अंदर हैं और दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट मीन्स दे आर नॉट कोलिनियर. सो दे आर समथिंग लाइक दिस. सो दे आर नॉट ऑफ दिस फॉर्म. सो दिस इज द फर्स्ट वेक्टर V and this is the second vector W. So this is not the case. They are linearly independent. So if this is the case, then we can write down eta of AV plus BW CV plus DW is equal to the determinant ADBC into eta of VW. Okay, so let's see इसको कैसे हम प्रूव करेंगे. So by using the properties of eta. So AV plus BW CV plus DW is equal to, I can write down using the property of linearity. So eta is linear in both coordinates. So अगर ये linear है in the first coordinate तो इसका मतलब है second को मैं fix रखूँ, जो second coordinate है इसको मैं fix रखूँगा और ये linear हो जाएगा with respect to the first. So this is A into eta V CV plus DW plus B into eta W CV plus DW. Now this can be written as, so this implies this is equal to A eta. Now eta is also linear in the second coordinate. इसका मतलब है V को मैं fix रखूँ तो I can write it down as A into C eta V plus A into D eta
VW. So plus B into C eta WV plus B into W eta WW. Now we have seen that eta of VV is 0. So whenever these two vectors are same, then they are 0. So this implies this is 0 and this is 0. So we get A D eta VW plus B C eta WV. Now we also know that eta of VW is equal to, अगर मैं V और W की प्लेस आपस में चेंज कर दूं, then this will be equal to eta WV. So what we get, AD eta VW minus BC eta VW. So just मैंने इन V और W की रिप्लेस कर दिया आपस में जगह, और हमारे पास एक नेगेटिव साइन आ गया जो यहाँ हमारे पास नज़र आ रहा है. सो दिस बिकम्स ईटा ऑफ VW मैं कॉमन ले सकता हूँ इनटू AD माइनस BC. नाउ दिस इज इक्वल टू ईटा VW. नाउ व्हाट इज AD माइनस BC? दिस इज बेसिकली द डिटर्मिनेंट AD BC. So this is the result. So this result is very important. The proof is very simple, but the result is important in the sense कि अगर मैं किसी भी टेंजेंट प्लेन पे मैं टू फॉर्म को इवेल्युएट करना चाह रहा हूँ. सो ईटा मेरे पास टू फॉर्म है, मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ. लेट्स से व्हाट इज ईटा ऑफ अल्फा एंड बीटा, और जो अल्फा और बीटा हैं वो बिलोंग कर रहे हैं लेट्स से टेंजेंट स्पेस टू P at M. Okay. Now let's say this is the point P and this is alpha and this is beta. अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा? अब आप देख सकते हैं अल्फा इज इन दिस प्लेन TP of M, और इस प्लेन में V and W are linearly independent. So V and W forms the basis of all the vectors in this plane. So alpha is a vector in this plane, so we should be able to write down alpha as some coefficients a11V plus a12W. So linear combination of V and W, because V and W are bases. Every element, every vector in this plane can be written as their linear combination. Similarly, I can write down beta as a21V plus a22W. So what will be eta of alpha beta? So according to this result, eta of alpha beta is the same as eta of a11V plus a12W comma a21V plus a22W. Now according to this result, this should be equal to the determinant a11, a12, a21, a22 into eta of VW. So कोई सा भी मैंने दो वेक्टर लिए अल्फा एंड बीटा, एंड आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस टू फॉर्म एट दिस पेयर. तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? आई शुड राइट देम डाउन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस V एंड W. सो बेसिस कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमें पता होना चाहिए, और इसको फॉर्म करना प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपके पास टेंजेंट स्पेस है तो आप उसकी बेसिस फाइंड आउट कर सकते हैं. So if you know the basis and if you know this value eta of VW, so this is the important value. If you know this eta of VW, then you can easily know the value of the two form at each and every pair of vectors belonging to this tangent space. So this result is important in that sense. So on surface, so we have seen the product of a P form and a Q form is a P plus Q form. So what is this product?
दिस इज़ नॉट जस्ट द यूजुअल प्रोडक्ट जिस तरह आप दो नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं या दो फंक्शंस मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज़ अ वेरी स्पेशल प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द वेज प्रोडक्ट. सो अगर मेरे पास कोई सी भी p फॉर्म है, लेट्स से psi1 wedge psi2 wedge psi3 up wedge psi p. So this is the p form, and let's say there is a q form, phi1 wedge phi2 wedge phi3 up to so on wedge phi q. Then their product, in other words their wedge product. So what is the wedge product? Psi1 psi2 psi3 wedge dot dot wedge psi p, wedge product with phi1 phi2 phi3 wedge phi q. So आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3, ये हमारे पास p हो गया और ये हमारे पास q हो गया. So this is p plus q. So the product of a p form and a q form is a p plus q form. Now all of these are one forms. अगर ये one forms हैं तो उनका मैं product लूँगा तो basically ये product p times लूँ तो p form हो गई, ये product लूँ तो q times हो गई, उनका आपस में product लूँ तो p plus q form बन जाएगी. और basically this is the general result. So for example अगर मेरे पास psi1 है which is one form, wedge product with phi1 is a two form. Similarly अगर मेरे पास psi1 है उसको मैं psi2 से प्रोडक्ट लूँ, उसका मैं प्रोडक्ट लूँ psi3 से up to so on psi p से प्रोडक्ट लूँ, it is a p form. So this is true in general. अगर मैं कोई से दो p फॉर्म और q फॉर्म उनका प्रोडक्ट लूँ, तो जब भी मैं वर्ड प्रोडक्ट यूज़ करूँगा डिफरेंशियल फॉर्म्स के लिए, वन फॉर्म, ज़ीरो फॉर्म, टू फॉर्म, उनके लिए मैं यूज़ करूँगा जब ये वर्ड, तो बेसिकली मेरा मकसद हमेशा वेज प्रोडक्ट होगा. सो सिमिलरली द ज़ीरो फॉर्म एंड ए वन फॉर्म एंड टू फॉर्म्स फॉलो द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन. सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई वन फॉर्म है उसका मैं प्रोडक्ट लूँ टू फॉर्म के साथ तो मेरे पास थ्री फॉर्म आ जाएगी. सिमिलरली अगर मैं टू फॉर्म का प्रोडक्ट लूँ थ्री फॉर्म के साथ तो मेरे पास फाइव फॉर्म आ जाएगी. लेकिन सर्फेसिस के केस में हमने कहा था कि नो थ्री फॉर्म्स एंड हायर p forms. So higher means p greater than 4, greater than or equal to 4. So 3 4 5 up to so on तमाम के तमाम जो पॉजिटिव इंटीजर्स बन रहे हैं हायर देन 3, इन तमाम के लिए ये फॉर्म्स सरफेस के ऊपर ज़ीरो होंगी, एग्जिस्ट नहीं करेंगी. नाउ इसका मतलब है कि वो तमाम की तमाम फॉर्म, लेट्स से अगर मैं कोई सी टू फॉर्म्स लूँ, सो लेट ईटा 1 एंड ईटा 2 बी टू फॉर्म्स ऑन सरफेस. सो सरफेस के ऊपर टू फॉर्म का मतलब क्या है? इट इज़ लीनियर इन बोथ कोऑर्डिनेट्स. और कोई सा भी पेयर ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स लूँ टू द सरफेस तो मेरे पास हमेशा एक रियल नंबर आएगा और दे आर आल्सो लीनियर. सो इनका मैं अगर वेज प्रोडक्ट ले लूँ देन it is going to be a four form, but on surface four forms does not exist, so it will be 0. So this will always be 0. So लेकिन अगर मैं वन फॉर्म और टू फॉर्म का प्रोडक्ट लूँ वो थ्री फॉर्म हो जाएगी. once again that is 0. So let psi be a one form on surface. So surface के ऊपर कोई वन फॉर्म है, then eta wedge psi is also 0 because it is a three form. क्योंकि ये थ्री फॉर्म है इसलिए ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास eta into psi ये 0 होगा, क्योंकि every differential forms of degree greater than, strictly greater than 2 is going to be 0 on the surface. So basically अगर मैं surfaces को study कर रहा हूँ then there are no
forms of degree higher than 2. So if this is the case, then 2 को मैं कितने वेज से लिख सकता हूँ? So 0 + 2, 1 + 1 and 2 + 0. So ये दोनों केसेस सेम हैं क्योंकि इसमें से एक 0 डिग्री है, एक 2 डिग्री है. So basically मेरे पास एक और केस रह जाता है सिर्फ और सिर्फ, और वो है product of 2 1 forms. So how to multiply a 0 form and a 2 form? This is just the multiplication f into eta, where eta is 2 form, और अगर function है and this is a function from m to r, then f into eta is a 2 form. Similarly, अगर मैं eta into f लूँ तो once again 2 form, और 1 + 1 is also going to be 2 form. लेकिन इसको हम define कैसे करेंगे? How do we define a product of 2 1 forms? So आइए देखते हैं कि let phi and psi be 2 1 forms on the surface M. The wedge product phi into psi is a 2 form on the surface M, which is defined in the following way. So phi wedge psi applied on this pair of vectors v and w is going to be equal to phi of v psi of w minus phi of w psi of v for all pairs v and w of the tangent vectors to M. Now why phi wedge psi is a 2 form? Now हमें पता है, हमने roughly define किया हुआ है कि दो 1 forms लें, उनका wedge product लें तो मेरे पास हमेशा 2 form आएगी. लेकिन हमने जो आज 2 form की definition की है, आइए देखते हैं कि इस पे अप्लाई करके कि कैसे ये phi in wedge psi जो है ये मेरे पास 2 form क्यों बन रहा है. क्या ये उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है जो आज हमने डेफिनेशन की है 2 फॉर्म की? सो आइए देखते हैं जी. सो सबसे पहली बात तो ये है कि phi wedge psi is a function on pair of vectors. So pair of vectors पे अप्लाई करेंगे and the output should be real number. Now phi is a 1 form, psi is a 1 form. According to the definition of 1 form, what is phi of v? A real number. What is psi of w? A real number. What is phi of w? A real number. What is psi of v? A real number. और इन तमाम का addition subtraction करें तो मेरे पास एक real number आएगा. So basically जो हमारे पास पहली condition है वो satisfied है. Phi wedge psi is a function from the pairs of tangent vectors to the surface to R. Second condition हमारे पास क्या थी? Second condition थी they have to be linear in both coordinates. So it has to be linear in V, it has to be linear in W. So अगर मैं phi wedge psi लूँ और इसको मैं अप्लाई करूँ AV plus BW plus BU, AV plus BU W. So this is going to be equal to, according to the definition, phi of AV plus BU psi of W minus psi of AV plus BU and phi of W. Now phi is a 1 form, so it has to be linear. So this is by definition 1 form is a linear function. So this is equal to A phi of V plus B phi of U and whole multiplied by psi of W minus, so psi is also a 1 form, so this is equal to A psi of V plus B psi of U and whole multiplied by phi of W. So this is what we get, and so this can be written as, so यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ, so this is equal to, so यहाँ से अगर मैं फर्स्ट टर्म ये वाली ले लूँ और सेकंड टर्म ये वाली ले लूँ, then I will get A
phi v psi w माइनस ए मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस psi v phi w प्लस मैं b कॉमन ले सकता हूँ एंड दिस विल बी इक्वल टू phi of u psi of w माइनस psi of u and phi of w. Now this expression is equal to a. Now what is this expression? This is in fact the wedge product of phi and psi on the vector vw minus plus b wedge product of phi and psi on the vectors uw. So हमने कहाँ से स्टार्ट लिया था? phi wedge psi av plus bu w. So this is equal to a into phi wedge psi vw plus b into phi wedge psi uw. So basically ये जो हमारे पास फंक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया a v plus b w पे. So this is a v plus b u. So ये जो हमारे पास फंक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया on a v plus b u पे. So this is a v plus this is b u. So this implies that phi wedge psi is linear in first coordinate. Now how to prove that phi wedge psi is linear in the second coordinate? So ये चीज़ मैं as an exercise छोड़ रहा हूँ. How to prove that phi wedge psi is linear in the second coefficient means v is fixed and alpha w plus beta z. So आपने ये prove करना है that this is equal to alpha into phi wedge psi applied on vw plus beta into phi wedge psi applied on vz. So if this is equal then the second property is satisfied. So I am leaving this as an exercise. So and we can also see that the third property is also satisfied, that is eta of vw is equal to minus eta of wv. So ये भी मैं as an exercise छोड़ रहा हूँ. So इस केस में आपने क्या प्रूव करना है? What is the next exercise? So phi wedge psi vw should be equal to phi wedge psi wv. और ये बहुत इजी है क्योंकि जस्ट आपने माइनस कॉमन ले लेना है. तो ये वाली टर्म जो कि माइनस वाली है वो पहले आ जाएगी और जो पहले वाली टर्म है बाद में आ जाएगी विद ए नेगेटिव साइन. एंड बेसिकली दिस सेकंड एक्सरसाइज इज सिंपल. So we have defined what is a product of two one-forms on the surface. Now if xi is a p form and eta is a q form, then xi wedge eta is equal to minus 1 raised to power p plus q eta into xi. So आपने इनका order change कर दिया. So this is very simple to see. So let's say xi is equal to psi 1 wedge psi 2. So xi is a p form, so it is the product of p1 forms. Similarly, eta is equal to the product of q1 forms. Now what is xi wedge eta? This is equal to psi 1 psi 2 psi p wedge phi 1 phi 2 phi q. Now this is equal to, अगर मैं इस phi को start लूँ, now we are using the property that if xi wedge phi, this is equal to minus phi wedge xi. Now अगर मैं इस phi 1 को इसकी जो जगह है वो replace कर दूँ, so it will become minus
psi1, psi2, wedge, so wedge phi1, wedge psi p, wedge phi2, wedge phi q. So मैंने इन दोनों की जगह रिप्लेस कर दिया and I get a minus sign in the beginning. Similarly इस phi1 को अगर मैं मूव करता करता बिल्कुल शुरू में ले आऊं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -1 रेज टू पावर p, क्योंकि मैंने p टाइम्स इसकी जगह चेंज करनी है. पहला एलिमेंट ये है अप टू सो ऑन p-1 एंड p. इन तमाम p एलिमेंट्स को इसने स्किप करना है, तो हर एक दफ़ा जब ये स्किप करेगा अपनी पोजीशन को तो एक माइनस साइन आएगा. सो दिस इज इक्वल टू phi1 wedge psi1, wedge psi2 up to so on, wedge psi p-1, wedge psi p, wedge phi2, wedge phi q. सो ये तो एक phi1 था जिसने अपनी जगह चेंज की, तो मेरे पास -1 टू पावर p आ गया. सिमिलरली अगर मैं phi2 से स्टार्ट लूँ तो -1 टू पावर p दोबारा आ जाएगा. सो वो इसके साथ मिलके क्या बन जाएगा, -1 टू पावर p प्लस p. और यही प्रोसीजर अगर मैं इन तमाम के लिए करूं जो कि q है इन नंबर, सो दिस बिकम्स बेसिकली द डिजायर्ड रिजल्ट कि मैंने q टाइम्स q एलिमेंट्स की जगह रिप्लेस की हैं p टाइम्स. सो -1 टू पावर p प्लस q बन जाएगा. In case of surface, sign change only occur in the case of multiplication of two one forms, and in particular for one form phi we have phi wedge phi is equal to 0. So this can also be proved. Now the differential calculus of forms is based on exterior derivative d. So for zero form there is a real valued function f, the exterior derivative df is defined as this. So basically हमने exterior derivative define किया था और हमने ये कहा था that for any real valued function f, the exterior derivative applied on any vector v is basically the directional derivative of the function in the direction of that vector v. So this is the zero form and this is the exterior derivative, and this is the directional derivative. So this is directional derivative of f in the direction of v. So that's how we define the exterior derivative of zero forms. Similarly हमने exterior derivative define किया था two forms का और one forms का. So exterior derivative of one form is a two form, exterior derivative of zero form is a one form, up to so on. In general, zero exterior derivative of a p form is a p plus one form. So for surfaces we need to define the following, which is basically the exterior derivative of a one form. So इससे पहले हमने once again एक rough definition दी थी what is exterior derivative of a one form. अब हम इसको precisely define करने लगे हैं that what is the exterior derivative of a one form. So it has to be two form. So d phi. So d phi is a two form. So इसका मतलब है we can apply this two form on a pair of vectors. So in pair of vectors पे आप apply करेंगे, then this is equal to the partial derivative of phi of xv. Now what is xv? And so this is a surface, this is a point, and it is the tangent space at that point. Then we know that at any point P there are two types of curves. So one is the u parametric curve and the other is v parametric curve. So this is xu, which is the derivative or the velocity vector, and this is xv. And we also proved that xu and xv are linearly
independent. हमने ये प्रूव किया हुआ लास्ट लेक्चर में. So if these are linearly independent, then we can use them as our bases. So once we know the value of d phi on this pair of vectors, then we know this value at each and every vector in this plane. So for example, if this is any vector alpha, then it can be written as a linear combination of xu and xv, and if we can write them as a linear combination, then we can use the result that we just proved, that eta of av plus bw cv plus dw is equal to adbc eta of vw. So in this case, what are v and w? So in this case, these are axu plus bxv cxu plus dxv. So any element will be a linear combination of xu and xv, and if alpha and beta are two elements, then we can write alpha and beta as a linear combination of xu and xv, and this is equal to adbc eta of xu and xv. So we just need to know this value. So we are just interested in this value, or in other words, if this is a two form, then what is its value on this pair of bases. So this is defined as partial by partial xu phi of xv. Now what is xv? This is tangent vector, and this depend on the value of v. So basically कोई सा भी मैं point लूँ, basically it is equal to x of uv, because this is contained in some image of the patch. So this is x of d, and this is coming from some open set d in R2. So every element can be written as x of uv. So कोई भी element हो इस पैच के अंदर, उसको मैं लिख सकता हूँ x of uv, और ये जो u and v हैं ये बेसिकली वेरिएबल्स होंगे, बिकॉज दे वेरी विद ईच एंड एवरी पॉइंट. पॉइंट चेंज कर दूँ तो u और v चेंज हो जाएंगे. सो अगर मैं x v लूँ तो मेरे पास ये वेलोसिटी वेक्टर है, एंड इट इज़ ए फंक्शन ऑफ u एंड v. सिमिलरली अगर मैं उस पर फाई अप्लाई करूँ, जो कि एक वेक्टर पे अप्लाई कर रहा हूँ, एंड फाई इज़ ए वन फॉर्म, तो मेरे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन आएगा. सो मैं पार्शियल बाय पार्शियल u ले रहा हूँ एक रियल वैल्यूड फंक्शन का, विच इज़ ए फंक्शन ऑफ u एंड v. सिमिलरली सेकेंड टर्म में मैं partial derivative with respect to v ले रहा हूँ of a function which is a function of u and v. Now there is a problem. अभी जो मैंने definition की है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पैच से related की है, सिर्फ और सिर्फ xu से related की है. So that is fine. I can define d phi on this patch. Then I can take some other patch, let's say this patch, and I can define d phi on this patch. अप टू सो ऑन मैं तमाम के तमाम पैचेस पे सरफेस के डी फाई डिफाइन कर सकता हूँ. लेकिन उस वक्त क्या होगा जब दो पैचेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे. जब वो इंटरसेक्ट करेंगे देन फिर हमें ये पता होगा कि डी फाई हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन ऑन दिस पैच x एंड डी फाई हैज़ इट्स ओन डेफिनेशन ऑन दिस पैच y. व्हाट विल हैपन ऑन द इंटरसेक्शन? मैं डी फाई x डेफिनेशन लूँ या डी फाई वाई डेफिनेशन लूँ. सो दिस इज द प्रॉब्लम नाउ. हमने किसी भी पैच के लिए डी फाई डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगर वो पैचेस इंटरसेक्ट करें तो उस इंटरसेक्ट में मैं कौन सी डेफिनेशन अप्लाई करूँ, ये वाली या ये वाली. सो दिस इज द प्रॉब्लम एट हैंड एट द मोमेंट. सो दिस लेमा रिजॉल्व्स द इशू. दिस लेमा स्टेट्स दैट अगर एक्स और वाई कोई से दो पैचेस हैं और मेरे पास डी फाई है एंड फाई इज ए वन फॉर्म, तो डी फाई जो है मैं एक्स डी पे तो डिफाइन कर दिया, और डी फाई मैंने वाई ऑफ ई पे भी डिफाइन कर दिया, लेकिन उनके इंटरसेक्शन पे
they will be equal. So this is very important result, क्योंकि ये जो confusion थी कि हर पैच पे तो define कर लिया और हर पैच पे अपनी एक definition है, लेकिन जहाँ वो intersect कर रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है. So this issue is resolved by this lemma कि उनके intersection पे भी ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छी definition की है, बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें defined हैं और they will be equal on their intersection. Now these are two exercises from the exercise related to this section, and they will help us in order to calculate the exterior derivative of 1 forms and exterior derivative of 0 forms. So otherwise अगर आप जो हमने अभी definition की है d phi की, that depends on patches. So d phi की जो definition की है d phi x किया था, so depends on पैचेस. और अगर सरफेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर हम हर पार्ट के लिए एक पैच डिफाइन करेंगे और उन पैचेस को आपस में कलेक्ट करके लिखेंगे, तो मेरे पास डी फाई की डेफिनेशन आएगी. लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट हम ये रूल्स यूज़ कर सकते हैं. इन रूल्स को यूज़ करते हुए हम डी फाई ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा. इससे हमारे पास बहुत आसानी से exterior derivatives निकल आएंगे. Now this is a very important property which is our next result. कोई सा भी real valued function है, then d of df is equal to 0. The exterior derivative of the exterior derivative of a 0 form is 0. So अगर मैं exterior derivative लूँ 2 form का, then it will be a 1 form. So on a surface M, let eta be 2 form, then d eta is 3 form, and so this implies d eta is equal to 0. Now let phi be 1 form, so d phi is 2 form, and this implies d of d phi is 3 form, and this implies क्योंकि सरफेस के ऊपर 3 और हायर जो फॉर्म्स हैं वो 0 होती हैं, so this is equal to 0. So अगर मैं 2 फॉर्म लूँ या 3 फॉर्म लूँ, उनके लिए ये रिजल्ट ट्रू है. So the only thing to prove was d of df where f is a 0 form. So उसके लिए हमने ये रिजल्ट प्रूव करना था. So इसका जो प्रूफ है वो हम ओमिट कर रहे हैं. So not in the course. So how to show that the forms are equal? So if we have 2 1 forms phi and psi, then they are equal on this x of d. So what is x of d? This is just a patch on the surface, and basically it is image coming from some open set of R2. So if they are equal for xu and xv, then they are equal on this patch. So if this happens for each and every patch, then they are equal. So similarly, two forms nu and mu are equal on this patch if and only if they are equal for only these 2 basis elements. And once again we are applying the same result that we did AV plus BW CV plus DW is equal to ADBC eta of VW. So same result है, उसको हम apply कर रहे हैं. If they are equal for this, then they must be equal. Now if we have a very special surface, and this surface is R2, Euclidean plane. So let's say if this is R3 X Y Z, then this is R2 in R3. Now this is a surface in R3. So what are the differentials? So for example, what is the form of 1 forms on this plane? So this is equal to F1 du1 plus F2 du2, and u1 and u2 are
natural coordinate functions, and u1 and u2 are natural frame field of R2, and f and is any real valued function, and phi is a 1 form and eta is a 2 form on R2. There will be no 3 form क्योंकि हम एक surface की बात कर रहे हैं. Similarly, अगर मेरे पास कोई सा भी 2 form है eta, then this is equal to g of du1 du2. Now what is g? G is equal to eta of u1 u2. Now similarly, let psi is equal to g1 du1 plus g2 du2, and phi is equal to f1 du1 plus f2 du2. Then this implies that phi wedge psi is equal to f1 g2 minus f2 g1 du1 du2. Similarly, what is exterior derivative of f? So once again हमने वो rules apply किए हैं जो कि हमने अभी देखे थे. उन rules के तहत जो मेरे पास R2 है उसमें मेरे पास what is df? This is equal to partial f by partial u1 du1 plus partial f by partial u2 du2. और अगर आपको याद हो, this is the same definition जो कि हमने differential forms के section में की थी. Now similarly, what is d phi? It has to be a 2 form, and what is that 2 form? Partial f2 by partial u1 minus partial f1 by partial u2 multiplied by du1 du2. So basically जब हम R2 लेते हैं तो R2 is a surface, और इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक पैच बनेगा. क्योंकि पैच सिर्फ एक बन रहा है तो इसलिए इस केस में ये तमाम रिजल्ट्स लिखना आसान है. तमाम के तमाम R2 के लिए ये रिजल्ट्स हमने ऑब्टेन किए हैं यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट्स. So next we define what are closed and exact forms. So these are very special differential forms. So let phi be a differential form, and if the exterior derivative of phi is 0, then we say that this is a closed form, and if phi is the exterior derivative of some xi, so phi can be written as phi is equal to dxi, then we say that phi is exact. So these are 2 special differential forms, and we will be using these differential forms in our next discussions. So what we have learned today, हमने इससे पहले differential forms की थी in R3. आज हमने उनको restrict किया है to any surface in R3. उसके बाद हमने exterior derivative define किया, क्योंकि surfaces के केस में हमें सिर्फ 1 form का exterior derivative define करना था. So वो हमने define किया. उसके बाद हमने ये देखा कि there is a very special surface in R3 which is the Euclidean plane. और यूक्लिडियन प्लेन के केस में ये तमाम जो फार्मूलाज हैं ये क्या बन जाते हैं. उसके बाद हमने एंड में 2 बहुत स्पेशल डिफरेंशियल फॉर्म्स की थी विच आर क्लोज्ड एंड एग्जैक्ट फॉर्म्स. सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी इंटरेस्टेड इन मैपिंग्स ऑफ सर्फेसेस. दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.